and we are so excited for her 45th show right here live in front of all of us. I'd like to invite Divisha, and Divisha, please to introduce Kabir after you tell us about the morning and afternoon events. Most welcome. Hi guys, thank you so much. What's your name? Sorry, Neha. Thank you so much, Neha, for introducing me. It was a little broken one, but I would give you that. So, hi guys, welcome. Who all have seen my podcast before? Any one of them before? Yeah. Okay, not a lot of them. And who all are here for Kabir? Kabir. Who? I'm not introducing you yet. Please join in. So here is Kabir. Uh, where's his? Can somebody give him a mic? It's not working. Woo, woo. Can you hear me? This was the. I haven't even given an Yeah? introduction. This was the easiest It's one. okay. I'll sit and The chill. guest just popped in. Yeah, it's okay. I'll sit and chill. You give the introduction. Yes. So, how to? What's the name of your course, please? You shouldn't plug in the course immediately, yaar. That's the how will last they one. buy it otherwise? They've not even know. They don't even have any credibility about me. Yeah. But because you asked and so sweet about it, can you guys hear me clearly? Yeah. Yeah, great, fantastic. So she's been so kind to ask me. I just released a course which is. I also got to know this just 2 days ago. I thought it was not, but apparently it's the only course in India made for restaurants. Right. It's called How to Restaurant and Cloud Kitchen in 120 minutes. So that became like the header. That's why I was asking you about the course because I needed like a topic for the conversation. Okay, cool. So Today. now you have one. Yeah. How to Restaurant and Cloud Kitchen in 120 minutes. Yeah. And do you know why? Hello. Oh, yeah. Do you know Yeah. why it says 120 minutes though? Why? Because I work with 21, 22-year-olds who are here somewhere. Yeah. Astha and Ansh. There they are at the back, right over there. Put your hands up, guys. Yeah, Oh. these couple of 21, So is this 22-year-olds. because of their attention span? It's because of their attention That's span. what- Yeah, it's because if the course said how to restaurant and cloud kitchen in 3 hours, everyone will be like, ये मैं नहीं कर सकता. नहीं कर Yeah, मैं नहीं कर सकती. True. So, yeah. I think you should give out your course in like real formats, but who am I to tell you anything? Let's get started. Before I start, I always do this thing. Hi guys, welcome back to the TheDiviShow. You're on episode number 45. Ooh, nice one. Good job. Yeah. So, welcome Kabir. How are you? Fantastic. Before I was driving. I came here from Delhi, so I was driving and I was thinking, I should say something entertaining when I get on stage. Something to like make people interested. And then I realized. So, I got a slip disc when I was 25, and I fixed it. Okay, 2 years of physiotherapy and everything, I fixed it. And then 2 days back, I woke up with this pain in my lower back, and I was like, shit, it's back. So the one thing, when you said, how are you feeling? I'm feeling pathetic. I had the worst drive of my life. Also the best drive, because have you guys been on this new expressway? This Delhi-Bombay expressway? Yeah. Fantastic. I don't know I'm if I sure should say. your back didn't have any issue. I couldn't care less Yeah. because I just got a new car and I was driving it at 190, which is absolutely the worst thing to do in the world, but I had so much fun doing it. So I had a good time. But yeah, my point was that if I had to say how I'm feeling pathetic, but I'm feeling great. Same that goes with me. Last 2 days, I've been popping paracetamols like I don't know what because I had like the worst cold. But Yeah. here we are. So I think the one thing that the thing that I decided with that I was going to say first is, if your mother is telling you to take vitamin D pills, bloody take them. And Do B12. not bloody yes. B12 and D3. Calcium and vitamin D is the best bloody thing to happen to your life. Just take it, or you're going to be sitting on a stage like this with a stupid belt around you. So, yeah, that's how I'm feeling today. Wow. Let's get into the conversation now. Are you ready? Absolutely. How many guys or girls are from the FNB industry here? Belong to the FNB industry? Oh, really? Jitesh, please have a seat. Five people. Not bad. Yeah, not bad. How many of you are 22 or younger? Okay, still figuring out what to do in their lives. All right, great. So I think, and how many of you are from Jaipur?
Oh, a lot of them. So I have questions for all, right? Sure. So to start with, I think for below 22-year-olds who are still figuring out which space to get into, what to actually pursue, and then they are so FNB, when we talk about it, it's a very fancy game, right? बहुत अच्छा लग रहा है दूर से and मजे आ सिर्फ रहे हैं. दिखता है, हाँ. सिर्फ दिखता है, right? Because I have a marketing agency and I cater to a lot of FNB brands, so I know what goes behind it to actually ensure that those 10 people are even showing up to that restaurant every day. So I really want you to give people who are younger than 22 the advice to figure out whether they want to actually get into FNB really, or it's just they're getting into a fad. Okay. I have the best answer in the world for this. So, if you, there are some things that I think everyone should know about the F&B industry. Okay, an average restaurant. Do you guys understand what net profit is? Just put your hands up if you know what net profit is. Net profit. Okay, net profit is like when अगर एक business है 100 रुपए कमाता है वो 100 रुपए का माल बेचता है उसमें से 50 रुपए उसको माल बनाने में लगते हैं तो वो उसकी कॉस्ट हो जाती है फिर उसके बाद वो डायरेक्ट कॉस्ट है फिर उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है सब कुछ निकालने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है टैक्स वैक्स ईएमआई सब कुछ देने के बाद उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं एक रेस्टोरेंट मेक्स एनीवेयर बिटवीन 10 to 14% net profit. Okay, to give you an idea of how bad or good that is, a bar makes anywhere between 17 to 20% net profit. A trading business makes anywhere between 17 to 25% net profit. A tech business makes anywhere between 40 to 60% net profit. So, do you understand? If you are, when it comes to running a restaurant, when it comes to opening up a business, a restaurant is the worst kind. It's the worst kind if you want to just earn money, right? It is the overheads are stupid. It's like you have to pay for everything. Literally everything in the world is your problem. वो श्राद्ध चल रहे हैं आपकी प्रॉब्लम है नवरात्रे आ गए आपकी प्रॉब्लम है इलेक्शन चल रहे हैं आपकी प्रॉब्लम है एवरीथिंग इज योर प्रॉब्लम एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस सो दोज आर द रीजंस टू नॉट स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस बट व्हाई डू यू व्हाई डिड आई because I realized that there was nothing more satisfying than placing food in front of someone and seeing a smile on their face. Every day, till date, there are days that I get up and I'll be like, shit, why the hell am I doing this? There are friends of mine who have the same size of business as I do. You know, they employ the same number of people, but their revenue and their profits are almost double than mine, right? And that pinches at times. बुरा लगता है यार कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सिर्फ इतना कमाते हो. But what gets me going is that I go to one of my restaurants pages and I go to those reviews and I see the reviews. And जब ऐसे लिखा होता है ना best food ever or like this meal made my day. Or when someone says कि यार पता है मेरी like दिल्ली they say this in Delhi but ऐसे होता है मेरी आत्मा तृप्त हो गई है खाना खा के. You know, when someone says that, I'm like, dude, this is totally worth it. So if you have a very, very strong feeling for either any part of the business, which is service or kitchen or baking or housekeeping or front office, if you have a very strong passion, that's one. Two, if you are very people oriented, those are two really big reasons. Like, you know, if you have those, you can qualify to run a hospitality business. But three, you have to be an absolute nut job. You have to be a stupid person, right? Because there are going to be days when you're going to have to think, why am I doing this? Like, why am I even running a restaurant when it's not even making money and or like it's making such less money? Why am I doing this? You have to be able to go to sleep at night knowing that, you know, you're stupid enough to do what makes you happy and not just what makes you money. So if you are the kind of person who's happy doing what makes you happy and not just what makes you money, restaurants might be something you'd want to do. Right. I think it's a business that is very much passion driven, right? And a lot of, I think, 22-year-old or even under that or even 25 year old, they would think that they'll get the investment, the kind of investment that, you know, is enough to pick up a restaurant and then the boat will sail. How is that strategy for these young kids, I would say? Pick up investment.
Yeah. From where? कहाँ से मिल रही है? A lot of people like have this in their minds ki, you know, let's अच्छा, we'll start raise this, money. we'll raise the money, Yeah. and then it's a sweet thing to, you know, be a part I of. mean, if you can, very good, yeah. Like that's great. But you see, it all looks very fantastic. There's Forbes and Inc 42 and MOM, World of Marketing or whatever. All these Mad Instagram over. mad over marketing. All these Instagram pages and all these websites. They make it sound like पैसा तो बस निकल रहा है. Like हर दूसरी गली में पैसा बस मिल रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. You need, you need a sustainable business. There was, you know how in 2001 there was a .com bubble in America. जब मतलब हर जगह वेबसाइट्स खुल रही थी और वेबसाइट्स को कोई भी पैसा दे रहा था. आप कैसे भी वेबसाइट खोलो आपको पैसा मिल रहा था. फिर उसके बाद वो .com bubble जब फटा, when it burst, a lot of companies just went bankrupt overnight because it was stupid investments. People were so excited about the internet that they were just putting money into anything related to the internet. Which is what happened in India a couple of years back, that because India is such a booming market, foreign investors were just putting in money into anything, which is why you must have seen some very stupid businesses get funded. I'm not going to name any, but yeah, some very, very idiotic things getting funded. But that pattern is slowly changing. And what people have realized is that, like a couple of years back, I remember someone used to say that the multiple on a restaurant business is 7x or 8x of revenue. इसका मतलब है कि अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस बिक रहा है तो अगर उसकी सालाना सेल 1 करोड़ रुपए है तो उस बिजनेस की कीमत 7-8x हुई. मतलब द वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस 7-8 करोड़. ये मतलब 2-3 साल पहले लोग कह रहे थे कि 7-8x का मल्टीपल है. How is it now? Like, I don't know, I've not checked because I don't intend to raise money. But the point is, what I'm trying to tell you is that people have understood. I'm sure so many of you you must know someone who started a restaurant business and वो ठप हो गया या फिर नहीं चला या फिर बहुत अच्छा नहीं चला, right? See, I'm you would expect me to say all rosy and nice things about the restaurant business, but I'm not. But understand, I'm not just saying bad things to be like, यार ऐसा बकवास है. I'm not complaining. I'm not like trying to like whine here. All I'm trying to do is make sure that I give you the real picture. Okay, I want you to have a very real picture of this business because it is a hard business. If you go to Google and you write worst businesses to start or worst businesses to invest, somewhere inside there is logistics. कहीं आता है logistics, and उसके बाद somewhere in there is always a restaurant. So if there are young people in the audience, I'm not trying to say that don't think of that. Dream as bloody high as you can. Every other Joe Stock podcast or every other Instagram post will tell you that dream high as you can. All I'm trying to say is that don't just think about the money. Think about creating a solid product. I spoke to a couple of people who have food stalls here, and a while back I was speaking to someone else also, and I was telling them just think about the product, because believe it or not, the first thing that I thought of when I entered Jaipur is Rawat ki kachori leke jayenge. Yeah. Right? It's because that product is so bloody brilliant. And there are so many people who copied the same kind of kachori thing, but that it's all about the product. So it still stands out, I think. So whether that Rawat ki kachori is now worth 600 rupees a kilo or 1200 rupees a kilo, Yeah. I absolutely don't care. I'm going to take it back no matter what. So just focus on the product. Focus on building a product. Don't get caught in these dreams ki, oh, I will raise $200 million and then I will make unicorn company. That is crap. So when you talk about, we even come back to your course, what is your actual target audience? People who know they want to start a food F&B business of their own, or they already have the product in place and then they should be a part of it. Like what is your TG at the moment? So I don't want to just talk about the course, to be honest. But I'll sort of take that question. But thank you for asking me that. Well, I'll take that question and sort of use it to like tell you something about the business. The thing is, what I realized is that a lot of people start restaurant businesses thinking it's easy, right? क्या करना है? खाना ही तो बनाना है. कुछ भी बना लेंगे घर पे मम्मी का. Oh, a lot of people do this. पता है, मेरी मॉम से बढ़िया मटन करी कोई नहीं बनाता है. Yeah, so she becomes the chef then. सबकी मम्मी मटन करी बहुत अच्छी नहीं बना रही है. ठीक है ना, ये तो मैं प्लीज ऐसा तो नहीं कि सारी मम्मियाँ ही बहुत बढ़िया भरता या चिकन करी या राजमा बना रही है, बट सबको यही लगता है.
कि यार तू खा के देख यार, मेरी मामी के हाथ का खाना ना पागल हो जाएगा तू. ऐसा कुछ भी नहीं है. You have romanced that. Okay, you have romanced that food item in your head, which is what people do. They romance the idea of a restaurant business, right? कि हम ऐसा कर देंगे और मैं अपने दोस्तों को खाना भेजूंगा. अरे मेरा सर्कल बहुत बड़ा है यार, इतने लोग तो मैं कम से कम 500 लोग तो जयपुर में ही जानता हूँ, 100 लोग तो ऐसे ही ऑर्डर कर देंगे और शायद से कर भी देंगे, बट कितनी बार करेंगे? They will only maybe do it once, maybe twice, but the next time they order will only if your product is great. So I started realizing that कि shit यार, इतने सारे लोग इतना पैसा डालते हैं restaurants में. I take these one-on-one sessions with entrepreneurs, and I remember taking this one session with this one guy who put in almost 1.5 crore into a place. Absolutely. Yeah, 1.5 I've crore seen into a place which was making less than 10 lakhs a month. Do you understand how much that man was bleeding money? 10 लाख रुपए महीने से कम में 1.5 करोड़ की जगह इन्वेस्ट, मतलब इतना पैसा लगा के, और 1 साल 1.5 साल हो गया और वो अभी तक और पैसा डाल रहा था. एंड आई वाज लाइक तुम पागल हो गए हो, राइट? एंड अब पागल है वो, क्योंकि द बिजनेस इज सो इट लाइक आई सेड, यू नो, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ नट जॉब. मैंने भी अपने पहले रेस्टोरेंट में 2 साल दबा कर पैसा डाला था. देयर वाज अ पॉइंट एट मे बी 3 or 4 टाइम्स आई थॉट कि मैं बंद कर दूंगा इसको. तो you have to reach that tipping point, and then either you make it or you don't. And I've seen a lot of people not make it. So this course is simply about people to understand what you truly need. From my perspective, I'm not the biggest restaurateur on this earth, not even the biggest restaurateur in Delhi. Fuck, I'm not. I'm so sorry. I can abuse. Yeah. Okay. Great. I already No, there are started kids in the with audience. that, Sorry. so- No. I'm not even the biggest restaurateur probably in my colony. Hi. There was a kid there and she's saying hi to me. Not even the biggest restaurant in my colony probably, but what I did realize is that जब बैंड बज गई थी ना, जब मेरे बैंक अकाउंट, मेरी भी वही कहानी थी यार, वो जो हर एंटरप्रेन्योर की होती है ना. एक टाइम था जब सिर्फ 1 महीने के पैसे बचे थे और लगा था अब तो खत्म, मतलब अगले महीने तो कुछ नहीं होने वाला, सैलरी देने के पैसे नहीं होने वाले. एंड देन समथिंग हैपेंड. What was that something? We are going to go back on your journey as is, so might as well start from here. So when you began with Nazmi, you're saying you faced like a lot of losses for the first 2 years, Yeah. right? Crazy. And what was the mindset then? Because I'm sure people would learn from your experience as well, like how to, and it goes for every entrepreneur, I feel, not just somebody who runs a FNB business. At one point you go to a place कि यार नहीं हो रहा है, and अब क्या करना है, अब पैसे नहीं है, अब सपोर्ट करना है सपने को या चुपचाप कोई जॉब पकड़ ले, करना क्या है. सो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक एट दैट पॉइंट कि भाई आई कांट फिगर दिस आउट? हाउ डिड यू गेट थ्रू फ्रॉम दैट फेज? Yeah, see, my dad is a very successful restaurateur in Delhi. ठीक है ना? My man is crazy. He's made it big. Okay, and he runs a restaurant called Nizam's Kati Kebab. Okay, I make it sound like as if I've had a fight with my dad. ऐसा नहीं है. I just like to keep my professional life different from his professional life. Also because any people who are sons or daughters in business families and are working with their parents will know कि मम्मी पापा के साथ तो काम नहीं हो पाता. There are people in the front going like, yeah, nahi ho pata. So, so I just he's a great man, and what I realized is कि यार I can take his business, which was X number of outlets, and make 10 more, make 20 more, make 50 more, make 100 more. But I will wake up one day when I'm 50, and I'll be like, and I'll look myself in the mirror. I'll probably have like 2-3 kids, 2-3 dogs, just romancing my life right now. Right? And I look myself in the mirror and be like, कबीर पता क्या, तूने ना 0 से 1 की लड़ाई नहीं खेली. तूने कुछ ऐसा लिया जो ऑलरेडी सेटल्ड, हाँ 10 पे था, और तूने उसको 30, 40, 50 के, एंड दैट हैज इट्स ओन चार्म, दैट हैज इट्स ओन स्किल सेट. अब बट दिमाग में बात अड़ गई थी तो अड़ गई थी कि भाई आई वांट टू वेक अप एट 50 सेइंग कि यार वो 0 to 1 वाली फाइट भी मैंने खेल ली, मैंने किया, चाहे वो मैं एक रेस्टोरेंट के साथ क्यों ना करूं, बट मेरे को चाहिए वो. आई वांट दोस ब्रैगिंग राइट्स फॉर माई सेल्फ. आई डोंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई वांट दोस फॉर माई सेल्फ. तो पंगा लिया, डैड से बोला आप मेरे नाम पर, अपने नाम पर लोन लो, मेरे को पैसे दो. शुरू करवाया, 50 लाख का लोन था. आई स्टार्टेड द रेस्टोरेंट. This was Turkey project? Yes, this was Turkey project. I started with my uncle, and he was my chacha. He's younger to my dad, so he's 10 years younger, so he matches my
wavelength far more. So does my dad, but my dad is a little bit more orthodox. Great businessmen, both of them. ठीक है ना? I'm just saying this so that अगर देखें वो तो ऐसा ना बोले कि बच्चा बेइज्जती करके आ गया हमारी. अंकल को व्हाट्सएप करूंगी लिंक. नहीं, but so and I started that business and पहले लगा था कि 20 लाख लग जाएंगे और पापा को बोला था अरे बाकी तो पैसे इस्तेमाल ही नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा. सारे के सारे इस्तेमाल हुए और बाद में और लगे. ठीक है. सो घुसते ही सबसे पहले ओवरहेड्स क्या थे आपके सर पे? रेंट सबसे पहले. ह्यूमन The restaurant is called the Turkey Project, okay, and we don't even serve Turkish food. Yeah, you know why it's called the Turkey Project? I get that a lot. It's called the Turkey Project because तीसरा महीना चढ़ गया था और 3 महीने का हमारे पास माय गॉड स्टेज पे ये बातें भूलनी होती है. रेंट फ्री पीरियड था. 3 महीने का रेंट फ्री पीरियड था. ठीक है ना. एंड 3 महीने खत्म हो गए थे. रेस्टोरेंट बना नहीं था भाई. अगले महीने से रेंट देना था. कुछ भी नाम दो इसको, अभी नाम दो, चालू करो, पैसे तो आना चालू हो. ठीक है ना. सो देयर वाज दिस वन स्टोरी वेयर आई माय डैड मेड मी ट्राई टर्की मीट एज अ चाइल्ड एंड दैट मेड मी रियलाइज कि यार चिकन से आगे भी और बहुत चीज़ें हैं. तो मैंने कहा टर्की प्रोजेक्ट नाम रख दो. चाचू को बोला चाचू सही है. चाचू ने बोला डन कर, ख़त्म कर, चल आके शुरू कर दिया. कितनी बारी लोग आके पूछते इज इट अ क्लोथिंग स्टोर, इज इट अ लाइट्स की दुकान, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में इतनी सारी लाइट लगा दी थी अंदर. इतना इट यूज्ड टू लुक सो ब्राइट. सो रेंट वाज क्रेजी. इट एवरी मंथ ऐसा लगता था कि यार जा ही रहे सिर्फ यही निकाल लें तो मतलब आई थिंक दैट वुड बी द गोल व्हेन यू स्टार्ट ऑफ कि भाई रेंट निकाल ले बस. हाँ, लोग कहते हैं ना कि मैं तो अपने लैंडलॉर्ड के लिए पैसे कमाता हूँ. मैं अपने लिए तो ये बस मैं शौकिया काम करता हूँ. मैं अपने लैंडलॉर्ड का एम्प्लॉय हूँ. बाकी गवर्नमेंट ले जाती है. बट ऑल्सो दिस इज अ वेरी लाइक whiny entrepreneurship spirit that I'm showing right now, but that's also because I'm having fun talking to her about this. ऐसा नहीं है. ठीक है ना. मतलब like you asked me like how would you feel at that point of time, right? I would not. I was charged as hell because I knew कि that 0 to 1 की लड़ाई मैं पूरी करके रहूँगा. I'm not trying to boast about myself, but वो पंजाबी में कहते हैं गिरारी अड़ गई थी. मतलब it's basically like कि it was stuck in my head कि यही करना है. तो I was willing to do anything. It didn't matter what it was. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था मेरे को. Like I was just like कुछ भी करेंगे बस इसको चलाना है. फिर भी 2 साल के लिए नहीं चला. तो I think it was only that, right? कि that was my number one. You know, a lot of people say ना कि there are a lot of big people who made it big because of spite. किसी ने उनको बोल दिया होगा ना कि तेरी बस की नहीं है या तू नहीं कर सकता or you are not capable, and they just take that feeling and they push and push and push and push. I'm not saying my father or my chacha did that to me, no. But in my head, I had stuck that head that, Kabir, are you capable of fighting from 0 to 1? That statement just every day, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. So that's just what kept me going. And when you ask कि वो 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि हम पैसे कमाने लग गए, मतलब सच बताऊं तो इतना टाइम हो गया था कि मैं फिगर आउट करते रहता कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, ये चल रहा है नहीं चल रहा, ये चल रहा है नहीं चल रहा, हटाओ. जो ट्राई समथिंग नहीं चल रहा हटाओ, ये चल रहा है ट्राई समथिंग नहीं चल रहा हटाओ. Which is why one of my biggest mottos in life, and eventually we did something which worked, and which is what I talk about in my course. If you see the course, you'll see there are a lot of things that I explain. Ki this is how I landed on this thing. Ki ye finally chala, and that is from there. When you saying ye finally chala, is that you're talking about a brand or an operation technique that you use or a strategy? One idea, one strategy, one product. It was just that. Okay, I'll tell you what it is. It's called sorbet sangrias. Okay. Oh. Right. It's basically so the crux of that course is that if you cannot find something that is going to separate you from everyone else as a business, as a restaurant, as a person, it is going to be very difficult to find success. You know, if you are very different as an individual, as a person, people will just talk to you more. They will approach you more. They'll be more curious about you. Where is that place? There was some place that I had seen. The stall was like very nicely lit and very अलग से दिख रहा था वो. अब मेरी अलग से उस पे आंख पड़ रही थी because Jaipur coffee. I'm not sure. I don't want to like I don't want to be unsure of what that stall was. But I experienced as Atrangi. थोड़ा अतरंगी होना ज़रूरी है. तो वो अतरंगी चीज़
कैसे ढूंढना अपने रेस्टोरेंट में is what the course is about. Is Atrangi strategy, Atrangi product, Atrangi style, Atrangi branding, Atrangi naam, Atrangi plating, Atrangi khana, सब कुछ. That's Yeah. what it's about. Oh wow. To make you sound less whiny about things, I would love to ask you, what did you learn from your dad? Oh, my dad. Yeah. So So that he also loves the podcast when he watches it. yeah, of course. I'll be honest. ठीक है ना? Me and my dad had a very, very tough relationship in the starting years. Starting years मतलब 16 साल की उम्र I से. think it comes with the expectation कि यार तू ही business करेगा, and then you are in a space where you're figuring things out. No. No? No. For me, it was You not never, that. he never had that expectation कि यही No, करेगा. my dad was very chill. In fact, like he wanted me to do other things as well. And उस टाइम पे जब मैं पास आउट किया था 2011 से मैं स्कूल से निकला हूँ. तो 2011 में सबको नशा चढ़ा हुआ था कि यार इंडिया के बाहर जाना है, इंडिया के बाहर जाना है, इंडिया के बाहर जाना है. तो मैं कॉलेज करके वापस आया तो माय डैड सेड हियर्स आई एम क्लियरिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो टू कैनेडा. एंड आई सेड नहीं, मुझे नहीं जाना. So he did his bit. Like he said, well, do whatever you like. But as I turned 16, right, when that puberty mind hit, and when the hair started growing, and when I started feeling like a man, still don't feel like a man someday, but yeah, but when I started feeling like a man, um, something just changed, right? I started opposing his outlooks. I started having my own stand, like everyone else. सबका ऐसा होने लगता है ना अपने. You start developing your own style, and you start pushing against your parents' ideologies, or start testing them, or start seeing if कि पापा आपने तो बोला था Santa Claus होता है, सही में होता है कि नहीं होता है. फिर जब पता लगता है कि Santa Claus नहीं है, Santa Claus है for the kids, है Santa Claus. But when you come to know that, you're just like, अच्छा ये भी सच नहीं है तो और क्या सच नहीं है. So you start pushing against that, and that's what started happening to me. But do the values come around? Sorry? The values that you were pushing? So the thing is, what is the one thing that I learned from my dad? I think this is one thing that Gen Zs, millennials, all of us can learn from Generation Y, which is all the people who are 40, 50, 60 today. Patience, dude. Patience. What insane patience, man. मतलब आप लोग के ज़माने में क्या पेशेंस थी यार. हम लोगों में तो कुछ है ही नहीं. मेरा अमेज़ॉन का पार्सल एक दिन डिले हो जाता है तो मुझे स्ट्रेस होने लगता है कि यार ये डिले हो गया. बट पेशेंस, व्हाट पेशेंस. माय डैड तो there was a point of time when he was running a restaurant, his restaurant निज़ाम्स काटी कबाब, दिल्ली में मेट्रो बन रही थी. 8 साल मेट्रो बनी है. 8 साल. 8 years in front of his restaurant उन्होंने खुदाई कर रखी थी. मतलब ये रेस्टोरेंट है, स्टेज, और ये वहाँ से चेयर तक ये पूरा इतनी ही लेंथ खुदा हुआ है पूरा. दे वर लाइक वुडन के फट्टे. यू हैड टू क्रॉस देम टू कम टू द रेस्टोरेंट. सो ऑब्वियसली सेल वेंट डाउन. Man played it cool and easy for those 8 years. I don't know how he did it. I think holding the ground when it comes to every phase of entrepreneurship, just hold that ground. If you really believe in it, just stick to it. It'll turn around. And I guess the ideas that you are talking about, they don't come with a fluke. आपने भी मतलब 500 चीज़ें ट्राई करी होगी तब जाके एक वो सौरबे hit off. Sorry, I don't want to cut you, but patience in our generation is called persistence. The reason it's called persistence is because persistence is sexy. Persistence has sex appeal. Persistence is like, yeah, I'm persistent. I'm an entrepreneur. I kept on doing it. Patience is unsexy. Patience is what Dadu does. Wow. Persistence is what an 18-year-old boy with like spiky hair and like, sorry, a boy or girl. I'm a boy, that's why I say boy. But like with like Onitsuka tiger shoes and just be like, yeah, I'm persistent. Yeah. But you gotta be patient. Patient is unsexy. It's what Daduji is patient. Yeah. Young boy is persistent. So I think entrepreneurship is, you got to be patient, man. You got to be patient. Some people's journey to success is going to last 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years. Some will like maybe it'll take 20 years.
You know, I want to tell you something which I recently heard from somewhere, and this is the most amazing story of patience that I've ever heard. There's a rock band called Anvil. Okay, पुराने ज़माने में चलता था. You remember those times where there was Iron Maiden, Metallica, Pink Floyd used to perform live on stage. You've seen these old videos of these rock stars with like long hair and like head banging and smoking cigarettes, right? At that time, there was a band called Anvil. Anvil used to open for these bands. Biggest bands they used to open for. Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden, सबके लिए Anvil खोल रहा है. But they never became an Iron Maiden or a Pink Floyd or a Metallica. They never really got that thing. 40 years, the lead, the dude who was the lead guitarist and singer of Anvil, 40 years that man kept on doing that. Up till 5 years back, this man had a low salary job, matlab bare minimum wage he was making in the US. Still doing the same things, still going to concerts, still playing for like 7, 8, 10, 50 people, bare minimum life. Then he spoke to someone about his story. This guy is now 55 or something. 55-60 साल हो गए हैं, ठीक है ना? He's 55, 60. He spoke about his story to someone. This one director picked it up, made a movie. The movie is called Anvil. You can go see that movie. Made a movie called Anvil, and now that guy sells out arenas. 50 years it took him to make his dream. Yeah. 50 bloody years it took him to make his dream. So it's all about patience. Persistence though is a sexy way of putting it, but you got to have the patience, and maybe you'll have your Anvil story as well. Right. I think patience is one learning, but the FNB people who are actually struggling at the moment, they need much more than that. Probably, like I've heard this once, that everyone is looking for a one-man army. They want a commando force कि एक बंदा मेरा शेफ का भी काम कर ले, एक बंदा मेरा जीएम, वही सुबह चेंज करके वो जीएम भी बन जाए, वही सुबह ये भी कर ले वो भी कर ले, so that स्टाफ के पैसे बचे मेरे. And you know, these overheads don't go to waste. जो और इन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, where persisting through those problems or keeping patience through those problems is getting really difficult. चाहे वो finance wise हो कि भाई मैंने last night I earned 1 lakh, but सुबह वो कहाँ गए पता ही नहीं, 60,000 तो ये ले गया, 40,000 वो ले गया, it's done. I don't have anything. What am I going to survive on? So इसके ऊपर मतलब I think patience के ऊपर क्या आंसर है for all of them? यार ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनते हैं यार, बनते हैं पैसे, but you have to find your way. You have to understand that it takes time for any business to make money. Again, वो ये ना, patience is unsexy, right? It's unsexy for your business. I mean, these days, it's I mean, you know, all these big startups have made it popular to run on losses, and इसलिए छोटे छोटे business को भी लगता है कि यार अगर Zomato, Ola ये सब अगर losses पे चल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकता? Right? You know, there's a company called Regus, Regus. Okay, it is a co-working space. It has more locations or equal locations than WeWork. Okay, it is in as many countries as WeWork is. Huge, everything they have, and they're profitable. No one knows about them. Everyone knows WeWork. Why? Because WeWork has a story. WeWork has this loss-making company. इतने $1 billion डाल दिए. Founder used to throw parties in helicopters and on yachts, and used to do drugs and started all kinds of businesses that didn't run. So, like you just have to find your thing. You have to find your way. You know, I was telling someone recently कि यार अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ खाना पका के पैसे बना लोगे तो वो नहीं होने वाला है. अगर आपको खाना बनाना आता है, अच्छा खाना बनाना आता है, that's just the first step. After that, you have to learn finance. After that, you have to learn how to do your taxes. After that, you have to learn how do I save on TDS. How do I manage staff? Yeah, how do I manage staff, right? Like कि मैं कितने लोग रखूं और कितनी shifts रखूं कि मैं इतने में ही कमा पाऊं, इतने कम salaries रखूं, वो सब कुछ करना पड़ेगा. तो it's a tough thing to do, but it's fun, yeah. Like look at it like that. Look at it like I got to learn this. I'm going to be. That's the number one thing that I love about restaurants. I know a little about everything.
everything. I know a little bit about how to fix CCTV cameras also. I can probably do a little bit of your taxes also. अगर घर में आपका कुकर ख़राब हो गया तो वो भी मैं ठीक कर सकता हूँ. अगर गैस पाइप लूज़ हो गई है तो मैं उसको भी टाइट कर सकता हूँ आपके लिए. हाँ, प्लम्बर भी ठीक ठाक हूँ मैं. यूनिफॉर्म्स मतलब स्टिचिंग विचिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ पता है मुझे. Little bit of everything, but that's how I take it. Yeah, like it makes me such an overall rounded person, and that's not just restaurants in general. That's entrepreneurship for you. So you just take it with a pinch of salt and find your way through it. Making money is personal to your business. I can't comment like that. There's no one rule book or one thing to do to make money. You just gotta you just gotta stick to it and try to see what works for your story or your business. Right. I think your content helps a lot of people through that, because if you are putting out like 10 case studies, उनमें से एक बंदे को तो relatable लगती, and they stick around. I was just having a conversation with a previous guest of mine, and she's like, "Bhaiya, I'm addicted. मैं एक देखती हूँ and then I'm like, Kabir Chugh, okay, let's go." So I think that's the best part about it, that when you're curating content around it, you can cater to so many people and then nobody at once. You I'm sure you would have that feeling कि यार इतने लोग मुझसे relate कर रहे हैं, but I'm not actually 100% relatable to everyone. Yeah, if anyone wants to make content, there is only one reason why I make content. It is a documentation for me. Yeah. That's it. मैं सिर्फ अपने thoughts document कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही बकवास मेमोरी है, ठीक है ना. मुझे कुछ याद नहीं रहता है और मुझे इंटरेस्टिंग ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना. मेरे को डू यू नो अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग जिराफ्स इज कॉल्ड अ जर्नी. सच अ ब्यूटीफुल थिंग. डिड यू नो दैट? डिड एनीवन नो दैट? Like a group of giraffes is called a journey of giraffes. That's such a beautiful thing. I want to tell this to more people. I want to look cool. And that's the only reason I make content. That's the truth of it. Because I want to remember cool things to tell people. And I want to make friends with people. And I want to have conversations with people about this. So, अगर आप content को उस नज़रिए से देखने लगो ना कि यार फॉलोअर कितने आएंगे और व्यूज़ कितने आएंगे, और ऐसा नहीं कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ. माई 2 टीममेट्स बैक ओवर देयर, दे कैन टेल यू कि जिस दिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी रील पे अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मेरी बैंड बज जाती है अच्छी खासी, मतलब अच्छों की बैंड बजा देता है वो इंस्टाग्राम, ठीक है ना. बट माई बिगर थिंग इज़ दैट ओनली कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जो मैंने सीखा है. अब वो जिसको काम आ गया, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, जो मुझे करना है मैं वो कर रहा हूँ, राइट. तो वो दैट इज़ हाउ आई टेक इट. बाकी मैं इतना कोशिश करता हूँ कि मैं इतना ना सोचूं. समडे सोचता भी हूँ, बट कोशिश करता हूँ इतना ना सोचूं इसके बारे में. Right. I think I have a question that I personally would want to know. Influencer marketing helps businesses, क्योंकि from what I've seen, दिल्ली में ये culture अभी नहीं है, वो people जिनके around आप होगे. बट यहाँ पे ये कल्चर है कि ओके देयर इज अ ग्रुप ऑफ 30-40 ब्लॉगर्स, सबको PR इनवाइट्स भेज दो, एक जगह खोल लो, वो आ जाएंगे, दे विल एंजॉय द पार्टी, दे विल ड्रिंक, दे विल हैव अ बॉल, एंड उसके एक हफ्ते बाद देयर इज नथिंग. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पीपल in FNB just relying on that? Just relying on that, nothing is going to happen. Absolutely nothing. The day you stop doing it, it's going to fall. That's product अच्छा होना चाहिए, खत्म कहानी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सी इन्फ्लुएंसर्स, द ऑनलाइन वर्ल्ड. मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, ठीक है ना. आस्था पीछे बैठी है, शी इज़ माई टीममेट हु शी रिकॉर्डेड दिस कोर्स विथ मी, जिसके बारे में दिविशा ने इतनी बारी बात की, ठीक है ना. और मैंने एक कोर्स सिर्फ एक रीज़न के लिए बनाया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अंकुर वारिकू का नाम सुना आप लोगों ने, है ना. ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम. nearby.com के CEO थे, छोड़ के उनने कोर्स बनाया एक. उनका एक कोर्स है, इट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. वो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स 699 रुपये का मिलता है. वो 699 रुपये का वो इतनी बारी बेच चुके कि उनकी सालाना इनकम सिर्फ एक कोर्स से 7 करोड़ रुपया थी. 7 करोड़ रुपए. आई वाज लाइक व्हाट. और उस कोर्स का कंटेंट एक किताब पे, एक आइडिया पे बेस्ड है. एक ग्राफ है जिसमें बेसिकली आप मार्क करते हो कि व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड उसका पूरा बनाते हो कि व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट. इट्स बेसिकली अ ग्राफ एंड अकॉर्डिंगली इट हेल्प्स यू मैनेज योर टाइम. व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज लाइक ये मेरे को बनाना है. मतलब मैं सो रहा हूँ और पीछे मेरा कोर्स बिक रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे ये करना है. मैंने ये किया,
और हमने अभी डाला और हमने उस पर एड्स चालू करे, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, ठीक ठाक, मतलब हमने मेरे को कुछ वो रिकॉर्डिंग का कोई ज्ञान नहीं आता है, ठीक है ना। हमने नॉर्मल जाके एक दुकान पे गए, कैमरा खरीदा, यूट्यूब पे देखा, सीखा, नॉर्मल डिज़ाइनर को हायर किया, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-2.5 लाख रुपए खर्चे मैंने इस पूरे कोर्स को बनाने में, 7-8 महीने में। हमने कोर्स को डाला, एड्स चालू करे, आज चौथा, आज था, टुडे इज़ द 5th डे ना, टुडे इज़ द 5th डे, अभी चेक करियो कितने बिके हैं। As of now, today morning, we had sold 82 courses, ठीक है ना, 1,72,000 4 दिन में, 4 दिन में 1,70,000। No, don't clap for me. I'm just like, this is fantastic. मैं तो बोल रहा हूँ, I was telling आस्था retire भाई, अगर ये ऐसे ही चलते वाला है तो खत्म करो, कुछ नहीं बनाना इसके बाद, चिल करो। मेरा एक क्वेश्चन था ही कि कोर्स कैसे बनाना है, बट अब आप बता ही दो। मैं बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि the world of internet is fabulous if you use it to your advantage. Influencers are great. एक दिन में पूरे जयपुर को पता है XYZ रेस्टोरेंट खुल गया, बट उसके बाद भाई, उसके बाद तुम्हें चलाना है, उसके बाद प्रोडक्ट सही रखना, लोगों से बात करना, वो सब आपके ऊपर है। तो इन्फ्लुएंसर्स एक दिन ला देंगे, 2 दिन ला देंगे, दिल्ली में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में लोग पार्टीज करते हैं एंड दे कॉल दीज रियली गुड लुकिंग मॉडल्स एंड all of us, I was going to say all of us single boys, but I'm not single as of 5 days ago. So all of, like, you know, all of us just run to like, oh wow, yes, there's going to be a great party, wow. जाते हैं, and then, you know, like, and but we go for the, you know, like what they're showing us and what they're alluring us to, right? The product, the restaurant as a full product that you have to like make so that you have loyalty and people coming back. लगता है टाइम हो गया ना। इतना बचा है या इतना? हाँ, आराम से खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसे फायदा मत उठा यार उनके अटेंशन का। Yes. So yeah, but point being that influencer marketing is great to drag people in, but अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो सचिन तेंदुलकर भी नहीं चला सकता, विराट कोहली भी नहीं चला सकता। It's a balance. Virat Kohli reminds me of 1-8, amazing, like the food. Yeah, it's the product is great. Yeah, I was talking about this. Virat Kohli, the man is 1,000 crore rupee net worth sportsman, one of the richest sportsmen in the world. He has a restaurant brand. Why? You know why? Because it's, if your restaurant runs, no. Passion? Are you crazy? Do you really think Isn't Virat he like Kohli the Delhi ka ladka who loves butter chicken? Do you really think? Okay, put your hands up if you think Virat Kohli is passionate about running restaurants. Not one person put their hand up. I'll tell you why he started a restaurant. The reason Virat Kohli started a restaurant is because a restaurant, if it runs, is a brilliant mode of liquidity. आप बेचते हो सप्लायर से क्रेडिट में खरीद के, बट आप जब मेरे से खाना खरीदते हो तो आप मेरे को पेटीएम करके जाते हो, आप मेरे को कैश देकर जाते हो, या आप मेरे को क्रेडिट कार्ड से पे करके जाते हो। मेरे सप्लायर को तो मैं 40-50, कई लोग जो बड़े ब्रांड्स हैं वो 60, 70, 80, 90 दिन बाद पैसे देते हैं। कोई जो अगर ट्रेडर्स होंगे या कोई बिजनेस होगा, आपको तो पता होगा 120 दिन हो गए पेमेंट नहीं आई है, राइट? तो वो तो आप अपने सप्लायर को तो बाद में पैसे देते हो, आपके पास पैसे तो पहले आ जाते हैं। तो इट्स ग्रेट फॉर लिक्विडिटी एंड a lot of restaurants can survive on just that. क्रेडिट साइकिल पे सर्वाइव कर जाते हैं कि यार 45 दिन बाद पैसा देना है ना, मेरे पास तो आज आ गया। तो उस क्रेडिट साइकिल पे भी आप काफी टाइम तक रेस्टोरेंट को पुश कर सकते हो if you manage it well. So yeah, that's why he started a restaurant, man. Virat Kohli, if you're seeing this, I know it's a long shot, but if you're seeing this, he's a big fan of Nizam's rolls. Oh, really? He's a vegan now, so, and we don't do a lot of vegan food. So, but if you're seeing this, I have dropped you a DM. Please reply, yaar. Thank you. Oh, wonderful. You talk about the product should be exclusive. That's a thing that we have been discussing in this conversation. I also feel, I am talking for the people of Jaipur here. There is this tier 2, tier 1 thing always happening, which is so annoying as a person who is an entrepreneur based out of a tier 2, city. कि काम भी करवाना है तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हमने यहाँ जयपुर में खोल लिया, ब्रांडिंग तो दिल्ली की एजेंसी से ही होगी या बॉम्बे की एजेंसी से ही होगी, विदाउट
without giving a damn about the fact कि बॉम्बे दिल्ली के लोग यहाँ आते हैं अपना सारा शूट करवाने या अपने सारी ब्रांडिंग करवाने. They like there is still you know this is a myth कि tier 2 city कुछ कर ही नहीं पा रही है. So yeah. कौन कह रहा है tier 2 city कुछ कर नहीं पा रही है? There are some restaurant brands in Delhi, Bombay, Calcutta, in tier 1 cities, which are making almost all of their money from their tier 2 outlets, tier 2 city outlets. Okay, that is ऐसा कुछ भी नहीं है. Absolutely not. It's I think I'm more centered towards the resource that they want. कि अगर वो पोच भी करके लेके आ रहे हैं किसी शेफ को तो वो दिल्ली के वो एक रेस्टोरेंट से ही पोच करके लेके आ रहे हैं. That's I think trust है वो, right? मतलब क्या कहते हैं उसको, they have something to back up with ना. अभी दिल्ली में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो लोगों को लगता है दिल्ली से लाएंगे तो अच्छा होगा. You know, like for example, I have a Tamil restaurant which I run with a partner of mine, Rohit. That's Idli Nama. Idli Nama. It's called Idli Nama. So all our chefs are from I am doing a great job promoting all your things. Thank you. Very good. All my chefs are from Tamil Nadu. All of them. So why? And from a city called Madurai, Chettinad city, Chettinad food. Right? तो क्यों है वो? क्योंकि credibility उनके खाने में है, तो that's okay यार. मतलब वो तो it's only a matter of time. ऐसा नहीं है कि tier 1 है तो ये higher है और tier 2 है तो ये lower है. ऐसा कुछ नहीं है. That is the sense that I've seen in a lot of people around मतलब here. Especially जैसे दिल्ली वालों को इतना नहीं लगता होगा around the tier 2 cities. The tier 2 have this sense of, you know, aspirational चीज लगती है उनको tier 1 से कुछ लेके आओ तो. Why is that? That's not wrong. It's fine. I mean, like Delhi is a better city than an X city. No. X city. I'm saying X. No. yeah, no, absolutely no. मतलब मैं भी पागल हूँ ना यहाँ पे बैठ के स्टेज पे. यहाँ पे पिट जाओगे, वापस नहीं जा पाओगे आप. तभी मैंने X city बोला. नहीं but कुछ और दिल्ली से भी बेहतर होगा, फिर उससे भी बेहतर कुछ होगा. तो मतलब ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब चलता रहता है, राइट? कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. This is how I learned. I'm 5'5", okay, and up till 2-3 years ago I had a very big complex. मतलब बहुत I used to feel very underconfident that I'm a short man, right? फिर मैं realize किया यार, जो 4 फुट के उनको भी मिल रहे हैं, जो 5 फुट के हैं वो भी बिलियनर बन रहे हैं, जो 6 फुट का है वो मतलब इज अनसक्सेसफुल ऑल्सो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार. ये तो पर्सपेक्टिव की बात है. तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. Not generalizing also. Yeah, like for example, when my dad said कि, you know, go to Canada, you can go to Canada. उस टाइम पे भाई मैं उस टाइम पे बहुत सिगरेट पीता था. तो I remember telling people that the only reason I don't want to go to Canada is because यहाँ पे खुली सिगरेट मिलती है, वहाँ पे खुली नहीं मिलती होगी, तो इसलिए मुझे नहीं जाना. So पर्सपेक्टिव की बात है. मेरे को उस टाइम पे ये बढ़िया लगता था. अभी भी एक्चुअली दिल्ली बेटर लगता है मेरे को. सो दैट्स जस्ट पर्सपेक्टिव. कोई tier 2 tier 1 बोलने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है. That's a good thought. सही है सर आंसर. ये वाला बढ़िया ना. ये वाला सही वो तो गलत हो गया था कि यार दिल्ली इज बेटर देन एक्स. सर सिंह कि tier 1 या tier 2 बेवकूफ सब जगह बराबर होते हैं. Amazing. Do we have any questions? क्या मेरे को बेवकूफ बोल रहे थे क्या? Do we have any questions from the audience here? Anyone in FNB who would want to ask something from Kabir? Anything. I would love to like. Yeah, man. Sure. Like, do we have a wait? Hello, sir. Hi. Is it Dude, Kabir. No, sir. कोई server नहीं है. Kabir. Kabir. Is it possible to build a brand on Zomato and Swiggy only? If you don't have like a physical outlet or only physical presence, you can build a brand, sustainable brand, or I can say the profitable brand. बहुत मुश्किल है. You can, but बहुत मुश्किल है. Like बहुत मुश्किल है. Like the only brand that comes to my mind is वही Fasos. Again, You know, they are a digital only
ब्रांड, बट इट्स उनके भी क्या कुछ भी नहीं है प्रॉफिट्स, बहुत बहुत मुश्किल है वो। एक्चुअली क्या है ना, यू जस्ट रीच अ पॉइंट ऑफ टाइम वेर यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू योर एडवांटेज। मतलब आपके आउटलेट इतने, आपकी लोकेशंस इतनी सारी हो जाती हैं, आपके एम्प्लॉयज़ इतने सारे हो जाते हैं, आपके वेंडर्स इतने सारे हो जाते हैं, और आप स्टोर्स इतने सारे हो जाते हो, आप माल इतना बेच रहे होते हो, खरीद इतना रहे होते हो कि आप सब कुछ को एक कम दाम पे ले सकते हो। अब फासोज है, जैसे जोमेटो पे एक देयर समथिंग कॉल्ड सीपीवी, कॉस्ट सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। तो जब फासो जाता होगा तो उनको क्या कुछ भी प्राइस नहीं, मतलब एकदम ही सबसे बेस्ट प्राइस मिलता होगा उनको, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेंट्री लेते हैं वो। तो when you reach a really high level and then you can finally get economies of scale working for you. That's why I told you when we were having a conversation there also Yeah, कि exactly. how do you make money in the cloud kitchen business? 3-4 खोलो, 3-4 लोकेशंस खोलनी पड़ेंगी। 3-4 लोकेशंस खोलोगे, उसमें से एक शायद से, मतलब 2 शायद से बहुत अच्छी चले, एक शायद से बिल्कुल ना चले, एक शायद से मीडियम चले, मिलकर रेवेन्यू आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल चलना चालू होगी सारे। मतलब अभी अभी क्या होता है ना, एक आउटलेट के लिए अगर एक ही आउटलेट चला रहे हो क्लाउड किचन, तो आपको उस एक आउटलेट के लिए इलेक्ट्रिशियन शायद से रखना पड़े, एक बंदा आपने रख लिया, हायर पे रख लिया आपने, एक बाइक, एक डिलीवरी बॉय रख लिया, एक गाड़ी रख ली, ऐसा करके कर लिया। अब ये इस कॉस्ट को आप डिवाइड बाय 4 कर दो तो पैसे बनना चालू होते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, बहुत मुश्किल है, बहुत मैथ लगाना पड़ेगा, बट कर सकते हैं ऐसा। कर तो वैसे खैर सब कुछ सकते, बट मुश्किल बहुत है, मैं मना नहीं करूँगा, बहुत मुश्किल है। Okay, so I have to make myself realize that you cannot only build brand on the basis of Zomato and Swiggy, or basically a profitable. यार जोमेटो स्विगी पे सिर्फ ब्रांड, मतलब यार इतनी इतनी आबादी है वहाँ पे, वो क्या शार्क टैंक वाला बोट, ओनली अमेजोन ब्रांड। अब तो But अब तो ultimately you have to be offline to make sustainable. अब कर रहे हैं ना, मामा अर्थ अभी आईपीओ आया, राइट बिफोर द आईपीओ फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिटेबल दिखाया उन्होंने। उनने शुरू किए हैं, स्टोर शुरू करी हैं, दुकानें शुरू करी हैं, वहाँ पे डालना चालू किया है, सब लोग कर। नायका ने भी ऑफिस स्टोर्स निकालना चालू कर दिए हैं, सबको पता ही करना है, बट वो समटाइम और ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है यार जब मेरा सिर्फ माल बिकेगा, ऑफ द काउंटर बिकेगा, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ उसमें। बट टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट यार, आपके पास जोमेटो स्विगी है जनता आबादी के लिए, पूरे इतनी बड़ी आबादी के साथ के रीच में आप जा सकते why हो। you're also mentioning कि 4 आउटलेट खोल लो ताकि पूरी सिटी के कोने कोने में नहीं, आई एम सेइंग चार आउटलेट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ। आपके कॉस्ट डिवाइड होना चालू हो, क्योंकि हाँ। कॉस्ट एक आउटलेट पे बहुत भारी पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो बस वो ये बन सकता है, मुश्किल नहीं है, बट वो ये देयर कोर्स देखो यार, मैं बता रहा हूँ, Thank मैंने you so much. मतलब मेरे को जिस वेबसाइट पे मैंने होस्ट किया है ना कोर्स, मैंने जब कोर्स का प्राइस डाला, द कोर्स इज फॉर आस्था कितने का 2600, 2599 कोर्स। जब मैंने वो डाला ना, तो सबसे पहले मैंने डाला था 2499। जिस वेबसाइट पे मैंने होस्ट किया उसने मेरे को बोल दिया कि सर ये बहुत सस्ता है, द एवरेज प्राइस फॉर अ पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स इज 2700। मैंने कहा नहीं, आई एम ओके विद दैट, इट्स कंपैरेटिवली द वैल्यू दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक मेरा कोर्स खरीदो और मेरे को पैसे बनाओ, but it's that trust me that I really want people to, I don't want a graveyard of dreams, at least for the people who I'm reaching out to or who I can talk to. I don't want your dream to land in the graveyard. I want it to be at least reach somewhere. Everything that I know, everything in every way that I can help you is in that course. So see the course, hopefully it'll. Thank you so much. Thank you. Thanks man. Anything else? Do we have any other questions? Here. There's First a man here in the first row. Yeah, done. Hi Kabir, Hi. my name is Lakshya. Hi, We are Lakshya. from the Waffle Bite. So we have nearly 10 outlets in Jaipur itself. Fantastic. Okay, 10 yeah. outlet. 10 outlets, yeah. बहुत So खतरनाक। Kabir, the thing is, ना क्वेश्चन थोड़ा सा weird हो सकता है, okay? But अरे यार, बहुत खुल बेसिक के बोलो क्वेश्चन यार, है, आप but और मैं मैं बात बोलता कर रहे हूँ, हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो कबीर द थिंग इज कि होता क्या है ना कि सपोज करो हमारा जो वॉफल है, लाइक जो मेन सेंट्रिक प्रोडक्ट है, दैट इज वॉफल्स, ऑलराइट, ठीक है। अब वॉफल्स में व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स कि हम जो वॉफल्स दे रहे हैं दैट इज विद द बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम दिखती है प्रीमियम क्वालिटी, एग्जैक्टली मतलब नहीं दिखती है,
हाँ वो दिखती है, मतलब हम उसको दे रहे हैं ना, आपको लगे कि यार वो तो खाने में नहीं भी है आपको- कि यार वो मतलब अपने दिमाग, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे कई लोग, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में होता है ना कि लोग सोचते हैं सर दिस गार्लिक इज स्लाइस्ड बाय माय हैंड पर्सनली, आई डोंट गिव अ रैट्स एस। Oh my God, trust me, we're not in Dubai. दिखना यार. दिखना चाहिए वो, ठीक है ना, मतलब Right. नो आई एम सेइंग कि ऐसे आप अपने वॉफल कह रहे हो कि मेरा वॉफल बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, क्या वो अगर मैं उसको सामने रखूं और किसी और को सामने रखूं तो क्या वो दिखता है कि हाँ Yes. इसमें है वो It क्वालिटी? looks and it tastes with ठीक the है सर, quality मान and लेते हैं taste आपकी बात, both are- done. मैं आपको खिलाऊंगा 100%. Okay. Done. That is the scene. So एक चीज जो पिछले कुछ मतलब हमने एक देखने में आई ना, what is that was seen was कि यार आप अपना जो वॉफल है आप अच्छा दे रहे हो, टेस्ट भी समझ आ रहा है, बट खाने वाले बंदे ने पता है क्या चीज़ बोली, ही सेड कि यार आप कम प्राइस में दे रहे हो, ठीक है, तो कहीं जो आप कम प्राइस में दे रहे हो ना तो आपकी क्वालिटी में आप कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहे, हाँ, मतलब तो ये जो कंज्यूमर रिलेट की it's bad ऑटोमेटिकली quality. दे रिलेट कि यार अगर आप सस्ता दे रहे हो ना तो आप खराब दे रहे हो, दिस इज दैट वन थिंग। तो हमें ना उस चीज़ पे बहुत स्टक हो गए थे कि यार इस चीज़ को आप क्या क्रैक करोगे, हाउ वुड यू से बढ़ा दो प्राइस बढ़ा दो बढ़ा दो प्राइस। नहीं बट यार नहीं, but, आई yeah. टेल यू वन थिंग, या प्लीज देयर इज मैं जब पहले एक रेस्टोरेंट पे खड़ा होता था, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर, तो मैं दिन में अकेला आदमी कितने लोगों से बात कर लूंगा, 8 10 15, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। राइट दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, मैं 8 10 से बात कर रहा हूँ, 8 10 में से एक दो ने मेरे को बता दिया कि यार कुछ भी खाना बहुत महंगा है यार, 2 लोगों ने बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मैं पर्सनली आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी, सो आई एम टॉकिंग टू दीज पीपल एंड आई एम लिसनिंग टू दीज पीपल, तो मेरे दिमाग में ना ये रह गया। और पता है क्या होता है, हम एंड अप सोचने लग जाते हैं कि यार सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, सब बोल रहे हैं, बट यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट इफ दैट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, if is your consumer actually thinking this also, at the end of the day are you making money? we're making money Then just Then it's okay. I was going to abuse, but like just chill dude, just chill. If 10 outlet Got देखो the भाई, point. cloud kitchen बना सकते हैं पैसे, all only Zomato brand, no dining as well, physical locations as physical well. locations as well, yes. Okay, great, fantastic. So have you heard of Belgian waffles, right? Yes, Yeah. they have nearly 480 plus outlets pan India. 480 आउटलेट इस कंपनी ने बनाए हैं, और इतना बढ़िया ब्रांड है ना ये, बिकॉज एंड आई लव इट फॉर वन वे रीजन कि इसके आउटलेट में कुछ नहीं चाहिए होता, हाँ. एक दो बंदे Waffle making दो बंदे machine, खड़े रहते हैं, वॉफल मशीन खरीदो 5-5 हज़ार या 8-8 10-10 हज़ार की, जो भी बढ़िया वॉफल मशीन आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना, बिकॉज एट द एंड एक हीटिंग एलिमेंट लगा यार वॉफल मशीन में, कितनी ही महंगी खरीद लोगे। तो 8 10 15 12 20 हज़ार रुपए की 3 वॉफल मशीन खरीदी, 2 बंदे रखे, बैटर दिया, उसको बताया कि भाई इसमें निकाल के ये डालना है, ये ऑर्डर आएगा तो ए डालना है, ये ऑर्डर आएगा तो बी और सी डालना है, ये ऑर्डर आएगा तो ई एफ जी डालना है, Right. बस इस पे बेस्ड उन्होंने फ्रैंचाइज पे फ्रैंचाइज पे फ्रैंचाइज पे फ्रैंचाइज पे फ्रैंचाइज, I think they made some 8 crores in net profit last year or something like that. Crazy company. So as Got the long point, as it's got the working point. for you, man, unless and until you don't like 5% से नीचे अगर लोग बोल रहे हैं, भूल जाओ, चैन की नींद सो जाओ, इट्स ओके। 5% से ऊपर अगर लोग बोल रहे हैं, देन एनीथिंग इज अ प्रॉब्लम, राइट। ठीक है। 5% 2-3% कंप्लेंट आएंगी, 1-2% लोगों को बोलेंगे कि सबसे खराब है, 1% लोग बोलेगा मेरे को कॉकरोच मिला, ये मिला, शायद से मिले भी ना, Right. बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, राइट वेरी वेरी नॉर्मल चीज़, ठीक है ना। आई एम वेरी अपफ्रंट अबाउट दीज थिंग्स। 5% से नीचे अगर कोई प्रॉब्लम है, मस्त होके सो जाओ, 10 आउटलेट है, पैसे बना रहे हो, रिलैक्स करो। गॉट इट थैंक As यू a ब्रो, थैंक person यू who handles brand communication also, I feel if you are communicating in a way to your audience ना कि भाई सस्ता है पर अच्छा है, it's वो भी बढ़िया है, clear, वो भी बढ़िया है यार। it's clear. तो communicate कैसे आप as a brand कर रहे हो कि you know we are giving quality products, test it with us. So I think that's आई एग्री विद यू, सस्ता है तो अच्छा है, सस्ता है पर अच्छा है, हाँ. पूरा इंडिया उस पे सर्वाइव कर रहा है यार, सस्ता है बट अच्छा है। राइट, द फैक्ट दैट यू आर होल्डिंग द ग्राउंड कि यार मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा पर मैं कम ही प्राइस में अच्छी चीज दूंगा, दैट शुड बी आई थिंक समथिंग दैट स्टर अ कॉन्वर्सेशन इन द सिटी. Are we done? Yeah, we are done. I think Karthike will be so happy that we are wrapping up finally. Here's a mic that's working. I have a quick question for you, Kabir. Do you know what's a group of crows? Sorry, ma'am? Do you know what's a group of crows called? A group of crows, a murder. Yes, A there murder. you go. And I think, you know, the journey that you had, which you mentioned, was very fantastic. Delhi to Jaipur. Yeah. I think it's not just the expressway. It's also the change in your single status just 5 days back, isn't it?
I don't know, maybe. Thank you. I loved the differentiation between persistence and patience. That was so important. Thank you so much. I think all of us got Thank you some very much. good tidbits from here, especially the F&B industries. Please, Jaipur, we want more good food. You've got the business bit of it. We want more good food, just like Vinayak and Shami serve us. Please, we want more good food. For all business stuff, you have Divisha and Kabir. We now have a great musical ensemble for you. They'll be here in literally 2 minutes. So give us 2 minutes and then I'll introduce them and we can hear some music together. 2 minutes break.